तो नहीं समझ में आएगा ना अभी प्रोटोकॉल। पहले हमें कंसेप्ट समझने होंगे, है ना। तो पहले समझते जाइए। थ्योरी इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट बिफोर द प्रैक्टिकल्स। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि कितना थ्योरी पढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। एनीवन थिंकिंग लाइक दैट? कितनी थ्योरी है, थ्योरी पर थ्योरी, नो प्रैक्टिकल। एनीवन? पवन जी को जरूर लग रहा होगा। पवन जी लग रहा है? नहीं लग रहा है ना, है ना। आपका आपका चेहरे देख के मुझे पता चल रहा है यार, इतनी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, हद हो गई यार। समझ में आता है मुझे, पर अभी तो मैं और पढ़ाऊँ थ्योरी थ्योरी। आप लोग प्रोटोकॉल खुद बनाओ तो मजा आता है, मैं बोलूं और आप बना दो तब मजा आता है, राइट। यू नो फिलोसफी इज वेरी बोरिंग, बट फिलोसफी इज वेरी इंपॉर्टेंट behind everything, right? We should understand the philosophy. So in this way, we have seen the meaning of dryness means atrophy, meaning of dryness means degeneration. आपने कहा कि किडनी काम नहीं कर रही है, भैया किडनी में ड्राइनेस आ गई है, राइट। ब्रेन काम नहीं कर रहा है बुढ़ापे में, ब्रेन में ड्राइनेस आ गई है। घुटने घिस गए, घुटने में ड्राइनेस आ गई है। ओके, सो गवर्नमेंट को भी पता है, मालूम है, गवर्नमेंट को भी पता है कि ड्राइनेस आ जाएगी तो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, इसलिए 58 की उम्र में रिटायरमेंट देती है और फिर फ्री में पेंशन, फिर फ्री में तो नहीं, फिर पेंशन देती है ना। गवर्नमेंट ऑल्सो नो that after the age of 58 the person will forget many things, right? So they start giving pension to the government employee because that is a phase of dryness. The knee pain will start, the brain degeneration will start. Okay, now let's move to the coldness. अब हम coldness की बात करते हैं। So this is the coldness. The coldness is the energy is very much important. We can consider it कि भैया ड्राइनेस में तो कम हुआ था या तो कम हो रहा था, but here in the coldness stoppage of the functioning, पूरा बंदी हो गया। कि किसी ने कहा भैया किडनी कम काम कर रही है, किडनी इज वर्किंग लेस, बट ही किडनी स्टॉप वर्किंग, किडनी फेलर। ब्रेन इज वर्किंग लेस हियर, बट ब्रेन स्टॉप वर्किंग, कि ब्रेन ने काम ही बंद कर दिया, ब्रेन ने पूरा काम बंद कर, राइट। सो हियर द मीनिंग ऑफ coolness, we can consider it as a stoppage of वर्क व इंटरनल ऑर्गन। कोई भी ऑर्गन का काम बिल्कुल ही बंद हो जाए, ठंडा पड़ गया मतलब ठंड, कोल्ड मीन्स डेड, है ना, बॉडी ठंडी हो गई, ऑर्गन ठंडा हो गया, सो दैट इज कॉल्ड कोल्डनेस, राइट। और वी कैन कंसिडर इन द ह्यूमन, वी कैन टेल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, when the person become unconscious, that is coldness, right. Or we can tell the person is going in the coma, or death is the coldness, death is the coldness, ये सब coldness। लेकिन कोल्डनेस सिर्फ बुरी बुरी नहीं है, कोल्डनेस अच्छी भी होती है। आप ऐसा मत समझना कोल्डनेस मतलब खत्म, नो। द मीनिंग ऑफ कोल्डनेस आल्सो फीलिंग ऑफ कोल्ड, फीलिंग ऑफ कोल्ड। समटाइम पर्सन इज फीलिंग हॉट, वी आर इंक्रीजिंग कोल्डनेस, फीलिंग ऑफ। समवन इज फीलिंग शिवरिंग, दैट इज आल्सो कोल्डनेस। किसी को ठंड लग रही है, शिवरिंग हो रही है, दैट इज आल्सो कोल्डनेस, राइट। गॉट इट। सो हियर
I would like to tell you one thing कि when we are having, हमारे शरीर में गांठें बनती है, there is a formation of the nodule, lump or the tumor. So when any nodule, like we tell watery nodule or cyst who is having water inside, or we can tell very very soft nodule or the lump, वो होता है ह्यूमिडिटी, कि हमारे शरीर में जो गांठें बनती है ना, एकदम पानी की गांठें हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट गांठें हैं, सिस्ट टाइप, दे आर ह्यूमिडिटी. But when they become hard, little hard, right? So they are called dryness, dryness, like a metal. So little hard nodule, hard lump, even lipoma, lipoma, right? कि जो गांठें थोड़ी कड़क हो जाती है ना, वो ड्राइनेस की ऊर्जा में आती है. ड्राइनेस. But when we become too hard, it is cold. Like the formation of the stone, we know kidney stone, gallbladder stone, like the kidney stone, gallbladder stone, they are, or the tumor, tumor हो गया, that is cold, right? So when we talk about the stone, ध्यान रखिएगा, when we talk about the stone like the kidney stone or the gallbladder stone, so remember two things. इसमें दो बातें ध्यान रखनी होगी. The silent stone is coldness. कि अरे भाई किडनी में स्टोन है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, शांत है. But when the person is having too much pain in gallbladder, too much pain in the kidney due to stone. So suppose this is the gallbladder, and inside the gallbladder we are having a stone here. So it is not necessary, many times no pain in gallstone. So we will tell it coldness. But sometimes what will happen, कभी कभी क्या होगा, stone is there but also pain. This is called cholecystitis. Chole means wall of the gallbladder. The meaning is chole means wall of gallbladder. And itis means inflammation, means heat. So there is an inflammation of the wall of the gallbladder, right? तो जब भी पेनफुल होता है तो हमेशा हम हीट पहले सेटल करते हैं. हम पहले हीट सेटल करते हैं बिकॉज हीट इज देयर इन द वॉल ऑफ द गॉल, इन द वॉल ऑफ द. गर्मी कहां पर है? गॉलब्लैडर की दीवार में. सो आई हैव रिटन हियर, इफ वी टॉक अबाउट द स्टोन, अगर हम स्टोन की बात करते हैं, साइलेंट स्टोन इज कोल्डनेस, but the too much pain. So pain is not in the stone, pain in the wall. So wall is red and inflamed. तो पेन स्टोन में नहीं होता, पेन दीवार में होता है आसपास की. तो वो दीवार लाल हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है. तो पहले हमें उस दीवार को ठीक करना होता है. जैसे आपके घर में पत्थर, आपके किसी एक गिलास में पत्थर रखा है, पत्थर तो कोल्डनेस है,
लेकिन अगर पत्थर ने ग्लास में इन्फ्लेमेशन कर दिया तो यू हैव टू ट्रीट द इन्फ्लेमेशन, दैट इज द हीट, राइट? So that's why we can see the patient is telling you, oh, I'm having too much pain of the gallstone. That time you have to work on the heat. I'm having too much pain of the kidney stone. Heat. Once the pain is settled fully, then we think about, oh, stone, now you have to break the stone. So how to break the stone? We will break the stone with the breaking the coldness. जैसे बर्फ बनी, बर्फ, राइट? बर्फ क्या है? कोल्डनेस. अब बर्फ को ब्रेक करना है तो गर्मी देनी पड़ेगी, राइट? we are giving the heat. Then your ice will be breaking. So stone is the coldness. But when we see the patient of the stone, we directly are not treating the coldness. First we will see whether there is inflammation. If the inflammation is there, then wherever the inflammation, like throat pain is the inflammation of the throat, that is heat. Like conjunctivitis, wherever itis, like the inflammation of the eyes, that is heat. Throat pain means pharyngitis, laryngitis, tonsillitis, that is heat. जब हम आइटिस की बात करते हैं तो हीट होती है, राइट? Cholecystitis. Cholecystitis means inflammation in the wall of the gallbladder, that is heat. So remember one thing, itis means inflammation means heat. Okay, so enough for today. आज के लिए इतना काफी है. अब हम मिलेंगे कल. Thank you so much. See you tomorrow.